अभी कंप्लीट करेंगे इन 5 मिनट्स, देन ओनली आई स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. हम कुछ भी ऐसा पीछे का वी विल नॉट स्किप. इज इट नॉट वर्किंग? कितने लोगों ने नहीं किया है क्वेश्चन? ऑनेस्टली टेल मी. हाँ, कितने लोगों ने नहीं किया है क्वेश्चन? नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट डूइंग. अगर एक ने भी नहीं किया है तो आई वोंट प्रोसीड. रीजन क्या है? अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि अगर आप छोटी छोटी असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे, सो हाउ यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस जो 20 मार्क्स के या इतने 20 क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे, कैसे करेंगे आप? अब यू हैव टू बिल्ड अ हैबिट. ठीक है, आई एम गिविंग द टाइम 5 मिनट्स, प्लीज डू दैट. Okay, how many questions done? Please, Karthik, tell them to switch on the AC. So, yes. Shall we start the class now? Done? Shall we start? क्या लिख लिया? If you have done, then say yes. Then also say yes only. मैं आप कैसे देख सकती हूँ आपके घर पे आके कि आपने क्वेश्चंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? Online students, they can enjoy that they are having a more leverage in that case. Yeah, I'm very good with all of you. Like I want to maintain that. But point is, अगर आप ये आपके benefit के लिए है. अगर मैं आपको नहीं, if I push you, तो फिर आप ऐसे you will keep on compiling the questions. Okay, good तनिष्का. हाँ, आपने attempt तो किया ना, you started. That is main thing. इसलिए मैं आपको ज्यादा टेस्ट नहीं दिस थिंग असाइनमेंट भी ज्यादा नहीं दे रही हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रही हूँ. ठीक है, सो डोंट डू दिस. ठीक है, यू आर गुड स्टूडेंट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. वी हैड टू स्टार्ट विथ क्लाइमेट ऑफ इंडिया, राइट? वी हैड टू स्टार्ट विथ दैट. यही हमने डिस्कस किया था कि हम क्लाइमेट स्टार्ट करेंगे, राइट ध्रुव? डिड वी से दैट? व्हाई पीपल ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेक्टिंग? इंटरेक्ट करना स्टार्ट करिए. ओके, क्लाइमेट ऑफ इंडिया.
कैसा है क्लाइमेट इंडिया का? लेट्स मेक दिस क्लास इंटरेक्टिव। ऑप्शनल के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी बहुत सीरियसली पढ़ते हैं ऑप्शनल को, क्यों वी हैव टू बी वेरी सीरियस, राइट? स्टार्ट इंटरेक्टिंग। व्हाट इज क्लाइमेट? व्हाट इज अ क्लाइमेटोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल? और क्या है क्लाइमेट इंडिया का? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है हमारा, राइट? जब मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, देन सी, हम बिट्स एंड पीसेस में हर जगह सुनते रहते हैं दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून आ गया, इस बार ठंड बहुत पड़ेगी, ला लीना, एल नीनो, एल नीनो है तो ड्रॉट है, हमारे हमें स्टोर कर लेना चाहिए सारे कमोडिटीज लाइक योर फूड आइटम्स एक्सेट्रा. And if La Nina is there, then it's going to be a biting cold this year. So these kind of terms we use a lot, but a lot of students do not know what do you mean by La Nina, El Nino, what do you mean by monsoon type of climate, what do you mean by Lu, what do you mean by Kal Besaki. So there are various terms which are locally used in different parts of the country. But the point is, for a geography option, or for that matter, for any person who is reading geography in detail, it is very important to understand that your this thing, your climate has interconnections with what? With a different phenomena in the world. It is not a separate phenomena. For example, your Indian monsoon is cannot be studied separately, although we have to study separately in the sense that we have to focus more on Indian monsoon type of climate of India. But having said that, if I say that it is not depending on the local factors, it's more dependent on the what is happening globally. For example, if I say that the wind patterns in between your Peru, which is in North South America, and between Australia will determine what kind of monsoon India will have. Is it true or false? Somebody who has read the climate, definitely for them it's true. So what is happening globally affects your phenomena of India. That is what you have to understand at first place. ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है उससे इफेक्ट हो रहा है. जैसे आपका सिंपली है, जो आपका अगर वॉर चल रहा है किसी जोन में, तो डेफिनेटली आपका फूड प्राइसेस वगैरह विल चेंज. क्यों? बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से आपका इम्पोर्ट्स आते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्ट्स आते हैं. देन दीज इम्पोर्ट कमोडिटीज यू आर डिपेंडेंट ऑन, ऑब्वियसली. तो फिर सप्लाई क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. बंद हो जाएगा तो प्राइसेस उसके बढ़ जाएंगे तो यू विल हैव सम इन्फ्लेशन इश्यूज, जैसे 2022 में हुआ था. बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर, व्हाट हैपेंड? The commodities got shortened up, and with the shortages of the commodities, the oil prices rose like anything. Then everybody had a problem, because now everyone is having cars. Forget about cars, even petrols and coal etc. uska bhi shortage ho gaya tha in different parts. So one has to understand one phenomena in one part of the country, it affects, there are repercussions which are happening not only in one corner of the world. This repercussion can also be reflected in another corner of the वर्ल्ड. ठीक है? इसी तरह से हमारा क्लाइमेट है. एक फिनोमेना अगर एक जगह हो रहा है तो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट करेगा, दिखाई देगा उसका इम्पैक्ट. तो हम इसको साइलोस में नहीं पढ़ सकते, हमें पढ़ना पड़ेगा इसको कंप्लीटली. I will give you the reasons why what is happening in the other parts of the world which is affecting the area, and then you will understand, okay, this is happening, that's why in India this kind of phenomena is happening. ठीक है? ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया. दिस इज योर जर्नलाइज्ड वे ऑफ टेलिंग इट. नाउ obviously we will go deeper, we'll go technical, but before that I have to understand that how much you know about some of the terms. Okay, कितने लोगों ने जीएस किया है? Like how many of you have actually done GS? करा है, ठीक है. People who have not done GS and not coming from that background, for them there are certain rules I want to tell you. ठीक है? देखिए, I have to explain you the phenomena of high pressure and low pressure. What is this phenomena of high pressure and low pressure? Simple terms में समझेंगे. जब किसी भी area में there is the evaporation happening. For example, this is an area and insolation is too high, intensity is too high, and then evaporation is happening. और evaporation हो रहा है तो क्या हो रहा है? This is going up, your water vapors are forming, this is going up. This is known as the condition of low pressure. Simple.
intensity of the solar radiation is high, water vapors etc are being created, they are moving up. Obviously जब water vapor create होते हैं तो क्या करते हैं, they are lighter in weight, they will move up, and when they move up, this whole phenomena is creating a pressure which you call it as low pressure. But when the temperature of these water vapor drops, they are converted back into what, your droplets, and they will descend. यहाँ पे क्या होगा, your air will ascend. Ascend means ऊपर जाना, ठीक है. यहाँ पे air will descend, and here when the air will descend, what will happen, this will create a area of high pressure, ठीक है. This is high pressure and that is low pressure. How many of you understood what is the difference between high pressure and low pressure? कितने लोगों को समझ में आया डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर? आया समझ में? ये है आपका हाई प्रेशर, ये है आपका लो प्रेशर. नाउ योर एयर ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. दिस इज योर यूनिवर्सल. कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एयर कहाँ से करे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर कभी नहीं जाएगी. इट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो द एयर मूवमेंट always happens from high pressure to low pressure. You can write this fact. It is important. You can write this fact. Air movement always happens from high pressure to low pressure. जब ये ऊपर जा रहा है, this we call it as what movement? This is known as your vertical movement. This is going up. This is your vertical movement. ऊपर जाना या नीचे आना दोनों ही क्या कहलाएगा? वर्टिकल मूवमेंट. ये भी आपका वर्टिकल मूवमेंट है. But when the air is going from this point, A point to B point, from high pressure to low pressure, this is going like this, in a straight direction like this. This is known as your horizontal movement. This is known as your horizontal movement. So this is your vertical movement, that is your horizontal movement. Okay. ठीक है, स्टार्ट करेंगे. अब लिखेंगे, start writing about introduction. पहले introduction डालेंगे. Write down the introduction. The climate of India is essentially the climate of India is essentially the climate of India is essentially subtropical monsoonic. Subtropical monsoon. You know the reason why? Because after 23.5 degrees, यहाँ से you have, इसके ऊपर you have subtropical stuff. So you have subtropical high pressure, subtropical monsoonic type of climate. Next लिखेंगे, write down next. The word monsoon has been derived from Arabic word. The word monsoon has been derived from Arabic word, which means
mossy, which means mossy, which means seasons are colder. But places will have a high pressure. But if we talk about relative manner में, जैसे अगर हमने बात करा इन रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, जस्ट इमेजिन यहाँ पे है टेम्परेचर 35 डिग्री या 40 डिग्री, तो 35 ही ले लेते हैं, एवरेज 35 डिग्री है, तो 35 डिग्री अब रिलेटिवली कौन सा ज्यादा कूलर होगा? दिस वन विल बी कूलर। तो रिलेटिव ये क्या हुआ? हाई प्रेशर एरिया, दिस विल बी लो प्रेशर क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर है। विंड विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट क्या एक्चुअली में 35 डिग्री वाला प्लेस बहुत कूलर है? क्या एक्चुअली में? ओह ओके, दिस इज नॉट, कैन यू कैन नॉट सी द Karthik, they cannot see the screen. They cannot see the screen. There is an issue. Just check. Yes. ठीक है? Can you see the screen now? Just Karthik, zoom कर दीजिए. Just zoom it. नहीं नहीं, स्क्रीन zoom करना है. हाँ बस 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 ये तो ठीक है. ठीक है? Are you getting the point? Now this is a ये क्या relate? This is your not now colder place. Relatively cooler है, पर actually में cooler नहीं है. तो आपको ये भी समझना पड़ेगा. ये relatively cooler है. ठीक है, लिखते हैं आगे. Madam, monsoons are periodic winds in which there is complete reversal of the wind direction. Monsoons are periodic winds. Monsoons are periodic winds. Second point, monsoons are periodic winds in which there is complete reversal after 6 months. After 6 months. There is complete reversal after 6 months. Full stop. Now write down, in the opinion of Chang Chia Chang, this is the name of a scholar. According to Chang Chia Chang, according to him, according to Chang Chia Chang, यहाँ पे CHENG आएगा लास्ट में, comma monsoon. According to him, write down, monsoon is a flow pattern of, double inverted commas में लिखेंगे, monsoon is a flow pattern
Monsoon is a flow pattern of the general atmospheric circulation of the general atmospheric circulation of the general atmospheric circulation over a wide geographical area, over a wide geographical area, over a wide geographical area, comma, in which there are clearly dominant winds, in which there are clearly dominant winds, there are clearly dominant winds in one direction in every part of the, in one direction in every part of the, in one direction in one direction in every part of the region concerned, comma, in every part of the region concerned, comma, but in this prevailing direction of wind, but in this, but in which this prevailing direction of wind, but in which this really this prevailing direction of the wind is reversed or almost reversed from winter to summer and from summer to winter, winter to summer and summer to winter. This is what he has to say. Now you can use this quote by or the definition by Chang Chia Cheng anywhere wherever there will be a question of monsoon which will be asked in the optional subject, then you can definitely use this scholar and define what he has said. Okay? Write down. Next line. Monsoons are especially prominent within. Monsoon, second point. Monsoons are especially prominent within. Monsoons are especially prominent within the tropics of the tropics on the they are prominent within the tropics on the eastern side of great landmass. Monsoons are especially prominent within eastern side of great landmass. They are prominent within eastern side of great landmass, comma, but in Asia, comma, it also occurs outside the tropics. But in Asia, it also occurs outside the tropics in China, comma, Korea, Japan, which may be observed up to 40° north. 40° north. Next point. Southeast Asia. Next point. Southeast Asia
comma, Southeast Asia, especially the subcontinent of India, especially subcontinent of India, Southeast Asia, especially the subcontinent of India. लिखिए, especially the subcontinent of India. However, there is a typical example of monsoon region. ठीक है? Now write down. Monsoons are a complex. Next point में. Monsoons are a complex meteorological. Monsoons are the complex meteorological. Meteor लिखते हैं ना, आप meteor लिखेंगे and meteor के बाद logical, meteorological. Meteorological phenomena, full stop. Experts of meteorology has developed number of concepts. Has developed. Okay, experts of meteorology have developed a number of concepts about origin of monsoons. About origin of monsoons. Now I am going to discuss according to, see, if you would have been doing the GS, I would have not discussed with you these all scholars who have discussed differently about the Indian monsoon. But there are scholars, for example, they have given, there is a thermal concept of Heli that we are going to do. What is this thermal concept of Heli? And there is another scholar also that we are going to discuss. So these scholars are describing the monsoon in a different manner. Okay, so we are going to have a look at it, and then although separately they won't be asked, but you have to write it in your monsoon topic. Whenever the question will come, 2 or 3 questions are expected, and then you can write about these scholars. Write down the thermal concept of Halley, Halley. The thermal heading डालेंगे, thermal concept of Halley. Thermal concept of Halley. Write down. Halley, a noted astronomer, a noted astronomer in 1686. In 1686. In 1686, hypothesized hypothesized that primary cause of primary cause of annual cycle of he hypothesized that primary cause of annual cycle primary cause of annual cycle of the Indian monsoon circulation. Primary cause of annual cycle of Indian monsoon circulation was differential heating. Was
differential heating. Is it true? How many of you actually understand the meaning of differential heating? क्या होता है differential heating? What is different? Simple. What is differential heating? Difference in the What is differential heating? Ma'am, during the day the land gets easily matlab it gets warmer Correct. than the sea Correct. part. Correct. This differential heating is that difference temperature is a land and sea temperature difference. That's it. Simple. Differential heating. क्यों होता है ये? Because in the daytime, the tendency of the land to become more heated is there, because land and water are going to have a different property. So in the daytime, this is going to get heated up. So this is going to create a region of low pressure. And what about water? This will relatively create a region of high pressure. So this will have the air will go from high pressure to low pressure, from sea to land. But in the night time, what will happen? In the night time, the land has a less tendency, because they will not get cooler easily. Cooling का जो effect है, land will get cooler easily, or sea will get cooler easily. Land will get cooler easily. ठीक है, land has a property of getting cooling up easily. It gets cools up easily in the night time, but sea will not. तो ये कैसा होगा? This will be a region की cool हो गया, तो ये कैसा होगा? High pressure region. This is a low pressure region. So wind blows from high to low. यहाँ पे कैसे blow कर रहा है? From sea to land. और यहाँ पे कैसे करेगा? From land to sea. और यहाँ पे sea to land कर रहा है, यहाँ पे land to sea. इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल हीटिंग. तो ये हेले ने बोला था that the main reason of this all happening is because of differential heating. How many of you agree with this? If you see the Indian monsoon, जिन्होंने भी GS में पढ़ा है, how many of you agree with this phenomenon, this Helle's words? हाँ हाँ. Difference in the heating of land and sea. Difference. Differential means what? Difference. इसी को ही कहते हैं differential heating. Because of the tilt, when the earth is facing the southern hemisphere, then the southern hemisphere is heated. When it the tilt changes, the northern hemisphere is. जो आप वो बोल रहे हो, पता है वो क्या फिनोमेना है? That is summer solstice, winter solstice. You call it as seasons जो create होते हैं. जो आप बोल रहे हो वो seasons की बात कर रहे हो. I know what are you talking about. इसकी बात कर रहे हो. पहले northern hemisphere this will get more heated up because it is insolation यहाँ पे ज्यादा है, so this will get more heated up. ठीक है, and then उसके बाद this will get less heated up, क्योंकि अभी क्या चल रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी की बात कर लेते हैं. अभी क्या चल रहा है? दिस इज योर, ऐसे ही तो है. सॉरी, उस साइड होगा ये. अभी क्या है? दिस इज गेटिंग अवे, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग अवे फ्रॉम द सन. वहां से अग्नि हो रहा है, यहाँ पे रेज अप पड़ रही है. तो दिस फिनोमेना यू कॉल इट एज, दिस इज अ साइकिल. इसको बोलेंगे समर सॉलिस्टाइस, दिस इज कॉल्ड विंटर सॉलिस्टाइस. और यहाँ पे जब होगा, ये होगा इक्विनॉक्स. ये फिनोमेना है इक्विनॉक्स का, और ये है आपका. सो दिस इज योर कॉल्ड बिकॉज ऑफ द revolution, not rotation, because of the revolution we are having different seasons. तो ये वो फिनोमेना है जो आप बोल रहे हो मानसून्स, वो उसकी वजह से होते हैं. आप कितना भी आप वो कर लीजिए, पर डिफरेंशियल हीटिंग ही नहीं होगा लैंड और सी के बीच में, तो मानसून्स कैसे क्रिएट होंगे? देयर इज अ कंफ्यूजन दैट यू आर हैविंग इन द कॉन्सेप्ट. अब ये बोल रहे हो ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जल्दी हीटेड अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द टिल दिस इज नॉट गेटिंग, वो सीजन्स हैं. दिस इज व्हाट यू कॉल सीजन्स. ये सीजन्स क्रिएट कर रहे हैं. तभी तो ऊपर अब समर होगा, नीचे विंटर्स. हाँ, वो नहीं डिफरेंशियल हीट. व्हाट यू आर सेइंग,
अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। हाँ, आप सही बोल रहे हो, इस वे में सही है, हाँ बिल्कुल, जो आप बोल रहे हो वो सही है, करेक्ट। अच्छा, यू आर ट्राइंग टू से कि आपका सदर्न हेमिस्फीयर में देयर वुड बी कोल्डर, हाँ ठीक है, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ से विंड ब्लो करेगी, ये कहना चाह रहे हो। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, बट आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ दैट इज हैपनिंग, वो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ये बात आपकी सही है, क्यों हो रहा है ये, बिकॉज यहाँ पे कूलर एयर इज कमिंग एंड यहाँ पे क्योंकि ये हीटेड अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या इन्वॉल्व हुआ। हाँ, वो आपकी बात सही है, करेक्ट, वो सही है आपकी बात, बट मैं कॉन्सेप्ट बात करती डिफरेंशियल हीटिंग का। ठीक है, राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हेली ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट monsoons are extended land and sea breeze. Monsoons are extended land and sea breeze. Monsoons are extended land and sea breeze on a larger scale, on a larger scale, on a larger scale, comma, produced by differential heating of, reduced by differential heating of land and sea breeze. Differential heating of, sorry, continents and ocean bases. Continents and ocean bases. Continent क्या है, लैंड, एंड ओशन क्या है आपका, ओशन बेसिन। ठीक है, फर्दर राइट डाउन, ड्यूरिंग द समर सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ड्यूरिंग द समर सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, comma, when the sun rays are vertical over tropic of cancer, just give me a minute, when the sun rays are over tropic of cancer,
Okay. Write down. During the summer season in northern hemisphere, comma, when the sun rays are vertical over Tropic of Cancer, comma, the huge landmass of Asia heats quickly. The huge landmass of Asia heats quickly. The huge landmass of Asia, huge landmass of Asia heats quickly. The huge landmass of Asia heats quickly and develop a strong low pressure and develop a strong low pressure near Lake Baikal. Near Lake Baikal. Where is Lake Baikal? Can you tell me where is Lake Baikal? It's in Russia. ठीक है, इम्पोर्टेंट है. प्लीज रिवर्स ये सब आप वर्ल्ड का प्लीज स्टार्ट करिए देखना. इट वाज सो मच इन न्यूज. ब्रैकेट में लिखेंगे साइबेरिया एंड पेशावर. पेशावर ब्रैकेट में लिखेंगे पाकिस्तान. ब्रैकेट में लिखेंगे पाकिस्तान. फुल स्टॉप. दिस थर्मल लो एक्सटेंड्स अप टू 700 MB. दे आर टेलिंग अबाउट द लो प्रेशर कितना कम होता है. 700 MB तक लो प्रेशर जाता है. फुल स्टॉप. Moreover, the poleward shift of the intertropical convergence zone. Moreover, the tropical shift of the poleward shift of further the poleward shift of the intertropical convergence zone to over southern Asia reinforces the thermally induced low pressure center. Further reinforces thermally induced low pressure center. क्या मतलब है इसका? What do you mean by thermally induced and all that? What do you mean by thermally induced low pressure centers? और मैंने एक और वर्ड यूज करा है इसके अंदर. कैन यू सी? ICTZ. It shifts to where? North Pole. Sorry, not North Pole. क्या बोल रहे हो? North Pole. Near Asia. क्या मतलब है इसका? What do you mean by this ITCZ? ध्यान से समझेंगे. देखिए ये आपका इक्वेटर है. ICTZ का मतलब क्या होता है? जस्ट टेलिंग यू दैट. अब आइडियली वी कंसीडर दैट दिस इज एन इक्वेटर. इसके ऊपर ही क्या होगा आपका? Here you are having 23.5 north. Here you are having 23.5 south. Ideally we consider that जो आपका इक्वेटर के पास ही ऐसा एरिया क्रिएट होगा which we call it as इक्वेटोरियल लो प्रेशर. ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ क्रिएट होगी आपकी? यहाँ पे. ठीक है, आइडियली वी कंसीडर दैट 0 डिग्री. पर ये जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री पे ही हो. ये तो हमने आइडियली लिया है फॉर द रेफरेंस. हो सकता है जो हाफ हो 0 डिग्री एक्चुअली में हो उसके ऊपर कंसीडर हो. दैट कैन ऑल्सो हैपन, क्योंकि हो सकता है इंटेंसिटी ज्यादा यहाँ नहीं यहाँ हो. राइट, इट कैन हैपन लाइक दैट. तो इंटेंसिटी यहाँ है तो आइडियली दिस इज नॉट योर इक्वेटर. आइडियली वी शुड कंसीडर दिस एज अ इक्वेटर.
0 डिग्री, दिस इज योर 0 डिग्री ऑन मैप्स जो हम लेते हैं। बट जो कंडीशंस जो 0 डिग्री पे होनी चाहिए वो एक्चुअल कंडीशंस कहाँ आ रही हैं? यहाँ पर आ रही हैं, इस वाले पर, इस वाले फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5 डिग्री, कंसीडर कर सकते हैं मैप पे 5 डिग्री है पर कंडीशन यहाँ पर आ रही है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे आइडियली? दिस इज 0 डिग्री। ये आपका क्या है? ICTZ या इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन, बिकॉज दिस है शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। क्यों शिफ्ट हुआ है नॉर्थवर्ड्स? क्योंकि सन की रेस कहाँ चली गई है? नॉर्थ साइड। और जरूरी नहीं है कि सन जो एक्ट करे, बिल्कुल जिनको सन को पता होगा ये 0 डिग्री है, मुझे यहीं पर ही, वो तो आइडिया से वी हैव टेकन हाफ ऑफ द अर्थ एज 0 डिग्री हियर। हमने आइडियली हमने ऐसे लिया है कि ये 0 डिग्री है, पूरा हाफ कट किया, दिस इज 0 डिग्री, पर वो कंडीशन जो 0 डिग्री पे हो रही है वो यहाँ नहीं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गई है, यहाँ पे आ रही है, तो हम इसको कहेंगे। सो योर आई सी, जब जिन्होंने बोला कि इट हैड शिफ्टेड नॉर्थवर्ड्स, उसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ हाँ, तो आईसी, इसका मतलब ये कि आईसी टीजेड हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स मींस व्हाट? नाउ आइडियली ये आपका 0 डिग्री होगा, कंडीशंस वुड बी लाइक, और ये सब कुछ इट विल मूव अप, ठीक है। So this is what it is saying. The thermally low extends up to 700 MB. However, poleward shift of the I intertropical convergence zone to a position over southern Asia. Southern Asia कहाँ है आपका? Here. ये आपका पूरा southern Asia ही तो है, तो इसकी तरफ मूव कर दिया है, ठीक है। जब उसकी तरफ मूव होगा तो क्या होगा? reinforces thermally induced low pressure. Thermally induced low pressure means what? जो सन की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दो तरह के लो प्रेशर होते हैं, एक होता है थर्मली इंड्यूस्ड, एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड। नहीं पढ़ा अभी? पढ़ा है, याद नहीं है, मैं समझा देती हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मली इंड्यूस्ड एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यू डोंट हैव पीपीटी ना अभी? लेट मी चेक इफ आई हैव पीपीटी ऑफ दिस। नहीं होगा तो वी विल डाउनलोड और सी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ जीएस का है, बट आइडियली कोई बात नहीं, बट आई विल एक्सप्लेन हियर ओनली दिस। ये कॉन्सेप्ट कर लो पहले, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, wait a minute, I'm just bringing that. That PPT will be required. Hold on.
यस, ये देखिए, how many of you can see this? This map, can you see this? ये दिख रहा है सबको? अगर नहीं दिख रहा तो just let me know. अगर क्लियर नहीं है, in that case just let me know. अगर क्लियर है, this one must be clear to all of you. I'll write the names of it. क्या क्या है ये? This is your intertropical convergence zone. I use another marker. ठीक है, this is your horse latitude, this is your polar front, etc. ये आपको अभी ये चीज नहीं समझनी है, ये सब क्या है, that I'll explain you. जो मेरा पर्पस है आपको समझाने का सिर्फ यहाँ पे इतना है that कौन कौन से थर्मली इंड्यूस्ड और डायनेमिकली इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि हेली ने यूज किया है थर्मली इंड्यूस्ड. बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत छोटे पॉइंट में, बाकी सब कुछ नहीं देखना. ये है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जिसकी मैं बात कर रही थी. दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लो. आइडियली भी कंसिडर इट एज 0 डिग्री, पर जरूरी नहीं है 0 डिग्री पे हो, ये शिफ्ट भी हो सकता है. जब शिफ्ट होता है तो वी कॉल इट एज इंटरट्रॉपिकल इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो है वो है सब ट्रॉपिकल. दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर. ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है इक्वेटर वाला, दिस इज बिकॉज ऑफ द वार्मिंग ऑफ व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, सोलर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है तो कह सकते हैं थर्मली इंड्यूस्ड है, मतलब बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. और सिमिलरली यहाँ पे कोई हीट नहीं पड़ रही है इस वाली बेल्ट पे, सो दैट इज ऑल्सो थर्मली. थर्मल का मतलब क्या है, या तो वो हॉट होगा या वो कोल्ड होगा, बिकॉज ऑफ द इधर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सन और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सन. अगर सन का प्रेजेंस नहीं है तो ऑब्वियसली कोल्ड होगा, लेस इंटेंसिटी है, तो ये भी तो है थर्मली. दिस इज ऑल्सो थर्मली. लेकिन जो ये बीच वाले हैं आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज योर डायनेमिकली इंड्यूस्ड. डायनेमिक का क्या मतलब होता है? अब इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सन, इट इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिविटी बिटवीन द टू बेल्ट्स. इसका क्या मतलब है? अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कौन सी डिग्री पे? 30 डिग्री पे. क्या यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट हो रहा है? हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि वहां पे डिसेंड करेगी एयर. इसका मतलब ये टेम्परेचर. अब ये देखिए सब पोलर लो प्रेशर होना चाहिए, सब पोलर पे. सब पोलर मतलब ठंड रहेगा वहां पे, पर यहाँ पे लो प्रेशर क्यों लिखा है? बिकॉज जो आपका सबसे हाई पे है, पोलार पे है, वो इतना ज्यादा ठंडा है दैट रिलेटिवली ये क्या होगा, इसका प्रेशर लो हो जाएगा. मैंने हमेशा बात करी है रिलेटिव टर्म्स में, आपको देखना है हाई प्रेशर लो प्रेशर. तो अगर ये हाई प्रेशर है, ये तो डेफिनेटली हाई होगा क्योंकि यहाँ पे तो सन की इंटेंसिटी बहुत कम है, 6 मंथ्स तक जाता ही नहीं है सन. वहां पे होता है ना आर्कटिक और अंटार्कटिक में 6 मंथ्स देयर इज नो सन और 6 मंथ्स देयर इज नो नाइट. सो दिस इज योर लो प्रेशर हाई प्रेशर. लेकिन जो नीचे वाला एरिया सब पोलर विच इज योर लो प्रेशर. कैसे बना सब पोलर? सब पोलर में टेम्परेट रीजन पे कैसे लो प्रेशर हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि जो ऊपर वाला एरिया है विच इज हाई और रिलेटिवली ये क्या हो जाएगा, लो. अभी कैसे होगा आई विल एक्सप्लेन यू डिटेल में, पर अभी के लिए आपको ये समझना है. तो ये क्या हो गया, ये दो आपकी बेल्ट्स होगी डायनेमिकली इंड्यूस्ड. अभी बेल्ट्स कौन कौन सी हैं, जस्ट हैव अ लुक. इंट्रोडक्शन कर लीजिए बेल्ट्स का. कैसा है बेल्ट्स? देखिए ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर 0 डिग्री पे. ठीक है, अब ऊपर गए 30 डिग्री तो 35 डिग्री, इससे ऊपर गए
ये क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल। फिर आप सब पोलर गए 60 डिग्री और ये गए आपका 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये 35 भी हो सकता है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 30 डिग्री पे ही होगा। सब पोलर हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। उसी तरह से सेम चीज होगा, बस साउथ लग जाएगा इसके नीचे यहाँ पे, साउथ में आने के बाद। आ रहा है सबको बात समझ में? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को ये बात एक्चुअली में समझ में आई है? नो दिस थिंग, जिनको नहीं समझ आई है दे कैन आस्क मी अगेन, क्योंकि इस पे पूरा क्लाइमेटोलॉजी बेस्ड है। ये समझ नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। इनफैक्ट क्लाइमेटोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो भी आप यही चीज पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे इतना जरूरत नहीं है इस चीज का, क्योंकि हम इंडियन मानसून पढ़ रहे हैं, पर स्टिल यू शुड नो, अगर थर्मली इंड्यूस्ड यूज हुआ है तो यू शुड नो व्हाट यू मीन बाय थर्मली इंड्यूस्ड। एटलीस्ट आपको ये तो पता ही होना चाहिए। क्लाइमेटोलॉजी में हम ये पार्ट डिटेल में करेंगे, नो डाउट। बताइए। ईशान इज सेइंग क्लियर मैम, सौम्या सेइंग क्लियर। व्हाट अबाउट ध्रुव? ध्रुव इज डाउटफुल। व्हाट अबाउट तनिष्का? क्लियर। ध्रुव पक्का क्लियर? ध्रुव एक बार और क्लैरिटी की जरूरत है तो प्लीज लेट मी नो। किसको क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ पे? राहुल बताइए। दीपाली मैम, सब ट्रॉपिकल इज आल्सो हाई डायनेमिक इंड्यूस एरिया। यस, आई टेल यू व्हाई, क्यों होता है वो भी मैं बता रही हूँ। सब ट्रॉपिकल पे डेजर्ट है, आपको लगता है डेजर्ट पे हाई प्रेशर होना चाहिए? सब ट्रॉपिकल पे हाई डेजर्ट है, डेजर्ट पे तो हमेशा आप सोचो कि गर्मी होती है, लो प्रेशर बनेगा, और वहां पे हाई प्रेशर होता है। क्यों? बिकॉज दीज एरियाज आर डायनेमिकली इंड्यूस्ड। ये आपका 0 डिग्री है, दिस इज योर 0 डिग्री। अब यहाँ पे आपका डायरेक्ट हीट पहुंच रहा है। समझ लीजिए, दिवाली नहीं समझ आया ना आपको? नहीं आया? पक्का? ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। आइडियली हम मैं इस 0 डिग्री को इक्वेटर मानूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली सनराइज पहुंच रहे हैं तो मैं बोलूंगी ये थर्मल। थर्मल से मतलब क्या होता है? थर्मल पहनते हो विंटर्स के अंदर? हाँ, थर्मल्स, वियर थर्मल्स इनसाइड द क्लॉथ। क्या है थर्मल? रिलेटेड टू हीट। ठीक है, सो अगर डायरेक्ट हीट पहुंच रही है तो क्या बोलोगे इसको? हीट सन की वजह, सन है तब थर्मल, सन नहीं है तब थर्मल, दोनों के इसमें थर्मल होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सन और एब्सेंस ऑफ सन। अगर प्रेजेंस हो तो दिस इज थर्मली इंड्यूस्ड, बिकॉज डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे सन नहीं पहुंच रहा तो भी दिस इज थर्मली इंड्यूस्ड। ठीक है, अब ये जो बीच वाला एरिया है, दिस इज 30 to 35 डिग्री है, जो सब ट्रॉपिकल वाला एरिया है, यहाँ पे हाई प्रेशर कैसे बना? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ ध्रुव। दिस इज योर लो प्रेशर यहाँ पे। अब ये बात देखिए, रिलेटिवली देखिए, ये आपका इक्वेटर है, दिस इज अ लो प्रेशर, रिलेटिवली यहाँ क्या होगा? हाई प्रेशर। क्यों? यहाँ से एयर ऊपर जाएगी और ऊपर जाके असेंड करती है एयर, क्योंकि इतनी ज्यादा वार्म हो जाएगी, ऊपर जाएगी, इट विल गो एंड असेंड। लेकिन इसका क्या है, इतना ज्यादा भी नहीं है कि ऊपर जाके क्या हो जाती है, एयर हैज अ टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग ड्रॉपलेट्स एज इट गो टुवर्ड्स, बिकॉज एज इट गोज टुवर्ड्स, एज इट असेंड्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स, एंड व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स उसके ऊपर नहीं जा पाएगी, तो इट डिसेंड्स ओवर सब ट्रॉपिकल। जब टेंडेंसी क्या है, जब कोई भी चीज डिसेंड करती है उसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वो असेंड कर रही है तो क्या है? हाई प्रेशर। सॉरी, असेंड कर रही है तो क्या है? लो प्रेशर। और डिसेंड कर रही है तो क्या है? हाई प्रेशर। अब यहाँ पे क्या हो रही है? जैसे असेंड कर रही, लिख लीजिए साइड में अगर किसी को डाउट है। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो असेंड, नीचे की तरफ आ रही है तो डिसेंड। और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आ रही है तो उसका क्या मतलब है? हाँ, हाई प्रेशर। तो ये क्या हो गया? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि ऊपर जा नहीं पाएगी, इतना है नहीं, जाना तो ऊपर जाती है पोलार पे, पर जा नहीं पाएगी वहां तक। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो डिसेंड करना पड़ेगा। कहाँ डिसेंड करेगी? हाई प्रेशर पे। और हाई प्रेशर पे जब डिसेंड कर देगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। क्यों? डिसेंड का मतलब आपका रेनफॉल वही होगा जहाँ पे एयर आपकी असेंड करेगी, यहाँ पे डिसेंड कर रही है तो यहाँ पे
रेनफॉल नहीं होगी, और जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती वहां पे क्या होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं। तो यू हैव डेजर्ट्स इन द सब ट्रॉपिकल हाई। कितने भी डेजर्ट्स ले लीजिए आप, आटकामा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, योर सहारा डेजर्ट, योर this Thar desert, they all are on subtropical high pressure. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दिस इज योर हाई प्रेशर, ये किस लिए है, अब ये डायनेमिकली हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो ये डायनेमिक क्या होता है, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन। तो ये तो सिचुएशन की वजह से हाई प्रेशर बना ना। आइडियली तो डेजर्ट के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहना चाहिए, डेजर्ट्स आर नोन फॉर हैविंग अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर लो प्रेशर। अब सब पोलार में लो प्रेशर, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सब पोलार में लो प्रेशर कैसे हो गया, सब पोलार तो टेम्परेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, कहाँ पे, पोलार पे, क्योंकि सन नहीं है, या यहाँ पे सन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे डिसेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, हाई, और यहाँ रिलेटिवली यहाँ पे वार्मर होगा। यहाँ से एयर डिसेंड करेंगी, वहां से ऐसा। कितने लोगों को ये बात अब क्लियर हो गई है कंप्लीटली? नाउ योर टास्क इज टू अंडरस्टैंड कि सब ट्रॉपिकल कहाँ से कहाँ तक है। जो लोगों ने ज्योग्राफी अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो ये ध्यान से देखेंगे सब ट्रॉपिकल कहाँ से कहाँ तक है, टेम्परेट रीजन मेरा कहाँ से कहाँ तक है। ये चीजें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए विदाउट एनी डाउट। ठीक है, नाउ राइट डाउन full stop. In comparison to this, everybody clear? Done? Okay. Now write down in comparison to this, comma, the pressure over adjacent water in comparison to this, comma, the pressure over adjacent water of the Indian and Pacific Ocean is relatively high. Indian and Pacific Ocean is relatively high. Write down next point. Under this, write down the next point. Under this, need a blank sheet. मिल जाएगी क्या? Write down under this condition, comma, a sea to land pressure gradient, a sea to land pressure gradient develops. अब ये sea and land pressure gradient क्या है? सिंपल ही देखेंगे, ग्रेडियंट मीन्स, घबराना नहीं है हैवी वर्ड से, ग्रेडियंट मीन्स सिंपली डिफरेंस। कहीं भी आपको ग्रेडियंट वर्ड दिखे मीन्स डिफरेंस। नाउ लैंड एंड सी प्रेशर ग्रेडियंट मतलब लैंड और सी के प्रेशर में डिफरेंस। सिंपल, अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लीजिए, वेयर यू आर राइटिंग दिस टर्म, डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी प्रेशर, इट मीन्स दैट। ठीक है, if you, for your understanding, if you want to write in your own way any language, you can write for the understanding, it means that, full stop. Consequently, the surface airflow is from high pressure over the ocean towards the low pressure areas, high pressure over the ocean towards the low pressure area over the heated landmass, over the heated landmass। अब ये लिखिए, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। Full stop. Under the extreme low pressure condition on land, under the extreme low pressure, under the extreme low pressure condition of land, comma, the wind from the southern part of the Indian Ocean is attracted towards the subcontinent,
is attracted towards the subcontinent of India. It is attracted towards the subcontinent of India. Full stop. The air coming from ocean towards land is warm. Please underline the word warm and moist. Underline both the terms warm and moist. Warm and moist. Write down. When the land barriers, when the land barriers like mountain ranges, when the land barriers like mountain ranges and plateaus come in the way of the moisture laden winds, when the land barriers like mountain ranges and plateaus come in the way of the moisture laden winds, comma, they descend and result into saturation, comma, condensation and precipitation and precipitation एंड प्रेसिपिटेशन. ठीक है, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, अब क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या मतलब है इस चीज का. एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे. ये देखिए, which area is getting heated up? This area, this Tibetan plateau will get too much of heated up. क्यों? Because land है, I told you land has a tendency of getting heated up very quickly. This will get heated up a lot. And the Siberia also near Lake Baikal and your Peshawar also. This will also get heated up. These are the big land masses which will get heated up because of the intensity of solar radiation in the northern hemisphere. किस टाइम पे? जून के टाइम पे. ठीक है, और अगर ये होगा तो क्या होगा? अगर ये होगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? ठीक है, जून के टाइम पे. सो दिस विल क्रिएट अ एरिया ऑफ लो प्रेशर. ठीक है, अब जब आपका मॉइस्चर पे अब क्या है, द सन विल, बिकॉज सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में वैसे भी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जून के टाइम पे सदर्न में क्या होता है, लेस टेम्परेचर होता है. तो यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहेगा? हाई प्रेशर. ठीक है, और वैसे भी जो डे टाइम में जो ये दिस एरिया है, ओशन है, इट टेक्स टाइम टू गेट हीटेड अप. दोनों फिनोमिना से ये हाई प्रेशर बनेगा. सो हाई प्रेशर क्या होगा, यहाँ से विंड ब्लो करेगी. नाउ इट विल पिक अप द मॉइस्चर. क्यों बोला उसने मॉइस्चर लेडन? उसने वर्ड यूज करा है मॉइस्चर लेडन विंड्स. क्यों? बिकॉज विंड्स के अंदर मॉइस्चर है. और मॉइस्चर कैसे आया? क्योंकि विंड जब इससे ब्लो करेगी तो मॉइस्चर क्या करेगी? पिक करेगी. जब ये मॉइस्चर पिक करेगी और यहाँ जाएगी और यहाँ पे माउंटेन बैरियर से माउंटेन को हिट करेगी और प्लेटूज को हिट करेगी. क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में भी क्या है, हमने फिजिकल फीचर्स में पढ़ा है कि यहाँ पे घाट्स है. इट विल टकराएगी घाट से, यहाँ पे प्लेटूज से या फिर यहाँ पे, तो क्या कर देगी? रेनफॉल. इट विल डू रेनफॉल. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेले. हेले ने क्या बोला? ऑल्दो विल डू द मॉनसून पूरा एक साथ में, पर अभी छोटे छोटे उनके कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. ठीक है, राइट डाउन. कॉन्ट्ररी टू दिस, कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट टू दिस, comma, in the northern hemisphere, during winter season, comma, there develops high pressure near Lake Baikal, Siberia. Near Lake Baikal, Siberia. Full
हाँ, हाई प्रेशर नियर लेक बाइकल एंड पेशावर। ठीक है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? मैंने कहाँ तक बोला है आपको? हाई प्रेशर एरिया नियर लेक बाइकल एंड पेशावर, बस फुल स्टॉप लगा दीजिए। एज कंपेयर टू दिस हाई प्रेशर कॉमा Indian Ocean and Pacific Ocean, as compared to this high pressure in as compared to this high pressure comma the Indian Ocean and Pacific Ocean where south of Japan, south of Japan, south of Japan remain relatively warm, comma having low pressure area, having low pressure area। मतलब कहने का ये है सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो आपका होगा हाई प्रेशर, बट क्योंकि ये भी वार्म, क्योंकि भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं ना, या पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, दिस इज आल्सो कमिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सन तो यहाँ पे भी पड़ रहा है, तो रिलेटिवली ये भी थोड़ा सा लो प्रेशर एरिया में रहेंगे। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है, दैट इज व्हाट हेले इज सेइंग। द एरिया ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर ऑफ द लैंड, कहाँ पे लास्ट लिखा? हाँ, ये विंटर सीजन की बात हो रही है, राइट? विंटर सीजन की बात है, प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दिस इज अबाउट विंटर सीजन्स, समबडी इज हैविंग कंफ्यूजन। अभी ऑपोजिट हो गया, हम अभी समर्स की बात, अभी विंटर्स की बात करें, अभी शिफ्ट हो गया कहाँ सन? साउथ में। अब साउथ में सन शिफ्ट हो गया तो क्या होगा यहाँ पे? कौन सा? करेक्ट। देखिए, क्योंकि हाई प्रेशर कहाँ पे बन जाएगा? अब यहाँ पे सेम जगह, और यहाँ पे फिर विंड्स यहाँ से ब्लो करेंगे, राइट नाउ। अकॉर्डिंग टू दिस, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग विंटर सीजन, आई एम अगेन रिपीटिंग, देयर डेवलप्स हाई प्रेशर ओवर लेक बाइकल एंड पेशावर एज कंपेयर टू दिस हाई प्रेशर comma the Indian Ocean Pacific Ocean remain relatively warm. Again I am using the word relatively warm, समझ रहे हो आप? relatively warm क्यों? क्योंकि डे टाइम में जो सन रिलेटिवली क्या होगा? वार्म होगा आपका क्या? और वैसे ठीक है, comma having low pressure areas, full stop। Consequently, there is outflow of air from high pressure of land. Consequently, there is outflow of air from high pressure of land to low pressure of ocean। Write down, full stop। The air blowing from high pressure area of land towards the sea, the air blowing from high pressure area from land towards the sea is cold and dry, full stop। This cold and dry is incapable of having or giving precipitation, is incapable of giving precipitation, this is incapable of giving precipitation unless it comes into contact with some water body, unless it comes in contact with some water body। अब इनका क्रिटिसिज्म क्या क्या रहेगा? देखो, इन्होंने सिर्फ बात करी किसके बारे में? About Halley has only talked about a few factors. He has only talked about
the differential heating, right? He has only talked about the differential heating. Hele has not talked about other points. For example, topography के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी. Ocean currents के बारे में there is no conversation. These are also the factors now we know. There is no phenomena that he talked about. He has not talked about topography. He has not talked about the shape of the continent, orography, condition of circulation in upper atmosphere. This is also important. Circulation of air in upper atmosphere. उसकी कोई बात नहीं करी इन्होंने. जब इन सारी चीजों की बात नहीं करी तो there is an issue. Why? Because he is just explaining the phenomena from one lens. There are many other things that he has to focus on. So there is this is can come in under his criticism that he has not focused on, because here now we know that monsoons are also dependent on these things. Monsoons are also dependent on the topography, the continent, the shape. Everything is dependent. And since he has not talked about all of these, so it becomes an issue. ठीक है, अब क्रिटिसिज्म में लिखेंगे राइटर एंड क्रिटिसिज्म. Rider and criticism. The low pressure areas that develop over the low pressure areas that develop over the continents during summer season. The low pressure area that develops over continents during summer season in northern hemisphere are not stationary. In northern hemisphere are not stationary. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉट स्टेशनरी. क्या स्टेशनरी नहीं है? जो समर सीजन, ठीक है, जो द लो प्रेशर एरियाज. अब स्टेशन जरूरी नहीं है कि जिस एरिया की हम बात करें वहीं पर ही बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो सकता है, कहीं और आपका लो प्रेशर का एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए. दीज लो प्रेशर एरिया चेंज देयर पोजीशंस suddenly. These low pressure area change their positions change their positions suddenly. एकदम से क्या करेंगे? They will change the positions. Full stop. This sudden change in the low pressure areas are not exclusively related to low thermal conditions. This sudden change in the low pressure areas are not exclusively related to low thermal conditions. Full stop. Next point. Had the monsoon been thermally induced, second point लिखेंगे, had the monsoon been thermally induced, had the monsoon been thermally induced, comma, there would be anti-monsoon circulation. There would be anti-monsoon circulation in the upper air of troposphere. In the upper air of troposphere, comma, which is lacking. Next point. Although high pressure and consequent
low pressure, although high pressure, and consequent high temperature, sorry, although high temperature and low pressure, although high temperature and low pressure takes the northwest in its grip, takes the northwest India की बात हो रही है, northwest India within its grip in April, but no rain starts in northern India, but no rain starts in northern India till mid of the June, till mid of the June. Next point. Modern researches in meteorology. Next point. Modern researches in meteorology have shown that monsoon rainfall monsoon rainfall is not monsoon rainfall is not totally orographic, is not totally orographic. Next point. Full stop. They are an amalgamation of convectional, comma, orographic and साइक्लोनिक रेनफॉल. किस किस की कॉम्बिनेशन है? सिर्फ ओरोग्राफी से कुछ. व्हाट डू यू मीन बाय ओरोग्राफी? जैसे अगर आपका यहाँ से दिस एयर असेंड्स ऊपर जाती है और यहाँ पे जाके डिसेंड हो जाती है, तो ये ओरोग्राफी की वजह से नहीं है सिर्फ. इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हाट? डिफरेंट फिनोमेना. सो ही हैज जस्ट फोकस ऑन ओरोग्राफी बिकॉज आता है, प्लेटूज वगैरह होते हैं, उससे टकराता है. और अब ये बात बताइए कि सब जगह के प्लेटूज जरूरी हैं? हो सकता है नहीं हो, कुछ एरिया में घाट्स नहीं हो, क्या वहां पे रेनफॉल नहीं होगी? इंटीरियर ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां तो आपके बड़े बड़े माउंटेन्स नहीं है, तो वहां पे कैसे आपका रेनफॉल हो रहा है? दैट इज ट्रू कि ओरोग्राफी की वजह से होता है, बट इट इज नॉट ट्रू कि सिर्फ ओरोग्राफी की वजह से ही होता है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां पे देयर इज नो घाट्स एंड ऑल द माउंटेन्स, तो वहां पे क्यों हो रहा है फिर? So that is what you have to understand. They are the amalgamation of conventional, CONVECE, conventional, ऐसे लिखेंगे conventional, तो लिखेंगे orography and cyclonic rainfall. साइक्लोनिक रेनफॉल मतलब कि साइक्लोन से बना हुआ, साइक्लोन से इंड्यूस हुआ हुआ रेनफॉल. ठीक है. नेक्स्ट. He has only talked about 2 seasons. One is winter, one is summer. तो कैसा हो सकता है? मानसून के कितने सीजन्स हैं? हमारे कितने सीजन हैं? इंडिया में 4 सीजन्स हैं. ठीक है. राइट डाउन. Instead of 2 broad seasons, winter and summer, instead of 2 broad seasons, winter and summer, the monsoon climate has more seasons. ब्रैकेट में लिखेंगे 4 in India. ब्रैकेट में लिखेंगे 4 in India. Comma, due to highly variable characteristics, due to highly variable characteristics of rainfall, due to highly variable characteristics of rainfall. Characteristics of temperature and precipitation करके लिखिए, rainfall नहीं, temperature and precipitation, that is a better way of explaining. और क्या उनका मिस्टेक रहा? That he has not taken into consideration the Coriolis force. Halley has not talked about Halley
did not mention the role of did not mention the role of Coriolis force, which is also important. He did not mention about the role of Coriolis force. Okay. Next, last line. The role of the latent heat passing. The role of latent heat passing into the atmosphere through water vapor was also not considered. Full stop. Water vapor also plays an important role in the origin and development of they also play important role in the origin and development of monsoons. अब आप next लिखेंगे मतलब next tomorrow we will do dynamic concept of flowing, but tomorrow we will do this, not today. This is a whole concept. Okay, now time to do your questions. Now we can quickly come to the questions. 10 minutes left. Okay. So from the previous year's question, we do have question in Indian geography from climate. आप लिख सकते हैं क्वेश्चन अभी क्रिटिकली एग्जामाइन लिख सकते हैं क्या ये क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ साउथ वेस्ट मानसून सिस्टम इन इंडिया अभी तो नहीं लिख पाओगे ना ठीक है ओके
ये लिखिए आप, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी. असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखिए पहले आप, राइट डाउन. एक्सप्लेन the thermally and dynamically induced pressure belts. Explain the thermally and dynamically induced pressure belts. Next point लिखिए, question लिखिए, assignment question. Explain the significance of ITCZ. Explain the significance of ITCZ. Next, write down. Explain the Indian monsoon through the lens of Halley. Through the lens of Halley. Next, write down. Explain the criticism of Halley's concept with respect to Indian monsoon. अगर आपके पास क्वेश्चन हेले के रिगार्डिंग नहीं भी आता है डायरेक्ट, तो आप क्या करेंगे, जब भी इंडियन मानसून के बारे में आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, यू विल मेंशन द स्कॉलर्स. ठीक है, स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट, मानसून इंपॉर्टेंट है. और जैसे मैंने स्कॉलर को इंट्रोड्यूस कराया, चैंग चिया चैंग, तो वैसे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हिम मानसून इज दिस. तो ऐसे आप इंट्रोडक्शन देंगे, देन यू कैन यूज सम डेटास आल्सो, यू कैन यूज डायग्राम्स, you can use this all facts, and then you will create a good answer, you will write a good answer. Okay, now start writing. You have 8 minutes. How much time is left? How much time? हाँ, हाँ ठीक, परफेक्ट है, इसी में लिखेंगे. आई एम गिविंग यू 8 minutes टू राइट. स्टार्ट राइटिंग. लास्ट के 2 क्वेश्चंस में से कोई भी एक, लास्ट के 2 हेलिस से रिलेटेड.
कहाँ तक लिखा आप लोगों ने? Done, everyone? How much you have written? Have you written? Everyone, time's up. कितना लिखा आप लोगों ने? मैम conclusion left. Okay. See, you have to work on this कि आप लोगों को you have to start writing in a way that time जो है आपका ज़्यादा ना लगे. ठीक है? That is important कि आपका time has to be taken care carefully. ठीक है? You have to take care of your time कि कितना time लग रहा है. Okay, practice whatever assignment I've given you today and yesterday. Please complete that. आज वाला assignment नहीं भी हो कोई बात नहीं. हाँ, ट्रॉपिकल जोन वाला कराना. कल वाला नहीं हो, कल वाला बाद में कर लेना. कल मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दूंगी. फ्रॉम टुमारो फ्राइडे आई विल नॉट गिव यू any assignment. आप
आ जाएंगे दिवाली ब्रेक से, या फिर जहाँ पे जब भी आप जा रहे हैं 2-3 डेज के लिए, देन वी विल हैव, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्डन यू, बस इतना ही असाइनमेंट था। एंड बट लेकिन ये ट्रॉपिकल जोन वाला कर लेना, रीजन क्या है, बिकॉज हम कल स्टार्ट करेंगे, ट्रॉपिकल जोन वगैरह नहीं समझ आएगा, प्रेशर बेड्स रिवाइज करके नहीं आओगे तो कल का क्लास थोड़ा सा आपको मिसिंग लगेगा। तो कल वाला असाइनमेंट आप बाद में कर लेना, मतलब जो आपको पहले दिया था, कल और परसों वॉट एवर असाइनमेंट आई हैव गिवन यू, एंड टुडेज यू हैव टू डू इट मैंडेटरी, ठीक है। थैंक यू सो मच।